he manifested as a man when these people ran after him, or was that just a run after him in which? Well, they ran after him with a stick. Was this a physical man? तो अगर पूछने के जब हज़रत बाजीद बोस्तामी शैतान के पीछे भागे तो उसकी शक्ल क्या इंसान मर्द की तरह थी कैसे भागा? मर्द की तरह थी. Yes, he was manifest as a man at that point. वो हर शक्ल इख्तियार कर लेता है. So he can actually adopt any form or image. जब वो उसको जन्नत से निकाला गया था तो सांप बन के मोर में दाखिल हुआ तो मैं हवा तक पहुंचा था. So when he was cast out of heaven, he formed the image, or actually formed into a snake, and he entered into a peacock, and that's how he actually approached Eve. Yes, he actually went inside the peacock, and then the peacock approached Eve, and that's how Satan actually got to Eve, how he approached her. A snake. That's a concept. तो इंसान के अंदर बहुत सारी ताकतें हैं ना, भगवानी भी, शैतानी भी, रहमानी भी. जिस ताकत को ताकत पहुंचाए वही बन जाता है. And within the human body there are different powers, powers of good, or spiritual power, powers of God, powers of evil. Whichever power you ignite and activate, that's what you'll become, good or bad. थोड़ी सी महफिल होते हैं, 4-5 कैमरा वाले आ जाते हैं. उसने भी एतराज किया था. जी सर. With all the sightings with Mary, how does he feel about that? I beg your pardon, sir. With all the sightings with Mary, is that for real, really, or is it a test? Significance of that, what does it mean? सारी पूछने के जो लोगों का ख्याल है कि माई मरियम दिख रही हैं मुख्तलिफ मकामात पर, क्या ऐसे हकीकत है? अगर है तो फिर उसका कोई मतलब होगा, कोई इम्तिहान है. लोगों का ख्याल है कि वो माई मरियम दिख सकती हैं, दिखना चाहिए, लेकिन अभी कोई सबूत तो नहीं है ना दिखने का. If Mary so wishes to be known or to make her presence felt, then she's able to do that, and that is possible. But we don't actually have any proof regarding those sightings. Proof, that is, of who it is that's appearing, right? Right. As opposed to the actual apparitions taking place. So मेरे पूछने का सबूत का आप ये मुराद है कि तस्वीर में कुछ कैमरे में है ना. ठीक है. अगर कहीं दिखती है तो कैमरे में है. And yes, if there is such sightings, if there are such sightings, then they should be on camera. People should take photos of them so that people could see what this is. कभी-कभी ख्याल है कुछ लोगों ने कुछ देखा है आसमान के ऊपर या कुछ पहाड़ों पर, तो उनका ये ख्याल है कि वो माई मरियम. कुछ लोगों ने देखी है, तस्वीर नहीं उनके पास मौजूद है. मतलब उन्होंने माई मरियम को देखा हुआ तो उनके अब तक वो कौन है? जी सर. Sightings may actually take place, but because people have not seen the original Mary, when they might see something in the sky that they may attribute as Mary. कोई और भी हो सकता है. It could be somebody else that may look like Mary, or it could be Mary, but the chance that if it's not Mary, somebody else, that people then may feel, oh, this is Mary. But there's nothing to compare with. There's no original to sort of say, oh, this is the Mary that we knew or that we saw, and she's arrived back again. अगर आसमान के ऊपर कोई और देखेगा ना, जी सर, तो सारी दुनिया भी देख लेना, तो ईसाई कहेगा माई मरियम है, मुस्लिम कहेगा हज़रत आमना है, जी सर, वो हिंदू अपनी देवी का नाम लेगा. जी सर. ये बात है ना. If the whole world could see an image of a woman in the sky, then the Christians would say she's Mary, the Muslims would say she's Bibi Amina, the Hindus would say she's one of ours. That's the trouble. That's the trouble with such sightings.
These women are always causing trouble. सरकार कह रही हैं कि औरतें जो है ना हमेशा ये फसाद करती रहती हैं. Shahi, with your teachings, with us, getting Allah in the heart, and as each of us goes forward and teaches, this is changing the world consciousness. It's raising the consciousness to the God consciousness. Do you feel that by doing this, that this is going to change our world pattern in any way? सरकार ये पूछ रही है कि आपकी जो तालीमात है और ये फैल रही है और हम तक भी पहुंच चुके हैं और हम भी लोगों को जब ऐसा बताएंगे तो यकीनन लोगों के अंदर ये शऊर बेदार हो रहा है, अल्लाह की तरफ राग़िब हो रहे हैं लोग. तो क्या है सारी दुनिया के ऊपर ये तालीमात छा जाएगी और इसका कुछ अच्छा असर होगा, इन लोगों की हरकतें बदलना शुरू हो जाएंगी, अल्लाह की तरफ वाकई राग़िब होना शुरू हो जाएंगे. मतलब अगर हरकतें बदलती ना हमारा भी तजुर्बा होता है कि लोग वैसे के वैसी हैं, हरकतें नहीं बदली ना, तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं मुफ्त में खामखा. उनको पता है कि लोग अल्लाह की तरफ दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, इनके आप छूटते जा रहे हैं, तब इस तरफ हम. That is the case, and indeed people are becoming God orientated, and it has affected people and is continuously doing that. If that wasn't the case, we make so much effort and travel to places and do so much work, then we would stop doing that. But we have experienced and we're seeing progress in the result. अभी जितने नशे करने वाले ना हमारे पास पहुंच जाते हैं, हम उनको अल्लाह सिखाते हैं, कुछ अरसे बाद उन नशे छोड़ देते हैं. For example, there are many people who drink to excess, and the alcoholics, and many such people come to us. And then we teach them Allah, and they practice this, and Allah comes inside them. And after some time, they stop drinking. It helps their lives. It helps them to overcome alcohol, for example. एक आदमी हमारे पास आया, वो ड्रिंकिंग करता था, बचपन से छूट नहीं सकती थी, तो फिर चाहता था किस तरीके छूट जाए, अल्लाह सिखाई. पता है इनको. There was a person who drank from a very early age. He was alcoholic, and he made some effort to stop drinking, but he found that very difficult. Excuse me. So he came to us, and we taught him how to do Allah. वो अल्लाह करता रहा, ड्रिंक भी करता रहा. 1.5 महीने के बाद उसकी बीवी आई, उसने कहा कि अब जब ड्रिंक करता है तो उसको उल्टी हो जाती है. He started to practice this Allah, but he still continued to drink at the same time. And then about 1.5 months later, his wife came to us and said that now when he drinks, he vomits afterwards. कुछ अर्से के बाद उसने ड्रिंक छोड़ दी और अब वो इस मिशन में बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है. And then after some period of time, he completely stopped drinking. And now he's a good example in this message, in this mission. He's working very hard. The Native Americans do this with the chanupa, the pipe, the sacred pipe. They believe that they can't do these things, either mostly drugs and alcoholism. When they smoke the pipe, pretty soon their beliefs, of course, is that the God comes through this pipe, and well, there's a lot of history behind that. But it's changing their lives also. So it may be a tool, but nonetheless, the lives are being changed through the God essence, even though it's just. So मैं बता रही हूँ यहाँ पर भी कुछ ऐसे देहाती लोग हैं जो इंडियन यहाँ के मुकामी लोग, तो हम लोग एक तरीका ईजाद किया हुआ कि वो हुक्का पीते हैं और उसके ज़रिए से वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद करता है. तो हमारे भी कुछ नशे, शराब, जुआ, जो चरस भंग पीते हैं वो छूट जाती है कुछ अर्से के बाद. वो शायद उन्होंने ये तरीका ईजाद किया हो, शायद उससे कुछ फ़ायदा हो उनका. नहीं, फिर उस हुक्के में उनसे ज़्यादा भी नशा होगा ना. That may be the case, but it also may be possible that in what they smoke in the pipe, there is a greater addiction, and that's why they leave the lesser addictions. Could be. It's pure tobacco, though they don't put anything in it as far as I know. And they don't look at that like that. They don't look at it as there's nothing in it to addict it. Well, that may be the case. But what Sarkar is saying that because they smoke the pipe, it maybe they get hooked onto a bigger addiction, something with more pleasure, so they leave the lesser addictions. कहने के ऐसा मुमकिन है, लेकिन उनकी नीयत तो ऐसे नहीं होती, लेकिन हो सकता है ऐसा मुमकिन है कि वो खालिस तंबाकू पीते हैं उसमें. ना तो जो खालिस तंबाकू होता है ना,
वो जो चर्स का बना हुआ तम्बाकू होता है उसमें बहुत ही नशा होता है। एक आम तम्बाकू होता है, एक उसमें चर्स